बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आप सबको वेलकम कहते हैं पीपीएससी मैथ 2020 की प्रिपरेशन में। आज से हम पास्ट पेपर्स को डिस्कस करेंगे, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मेरे पास आज पेपर है 2011 का पीपीएससी मैथमेटिक्स का। इसमें देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं और इनको किस तरह से हम डिस्कस करना है। मेरे पास पहला क्वेश्चन है, a ring R is a Boolean ring if for all x belongs to R. if इसमें देखेंगे कौन सा सूटेबल ऑप्शन है। x के इज इक्वल टू x, ऑप्शन बी x के इज इक्वल टू माइनस x, एंड ऑप्शन सी इज इक्वल टू x के इज इक्वल टू 0, एंड ऑप्शन डी इज इक्वल टू x के इज इक्वल टू 1। हम सबसे पहले इसके ऑप्शन को देखने के से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि बूलियन रिंग किसे कहते हैं। In mathematics, a Boolean ring R is a ring for which x is equal to x for all x belongs to R. That is a ring that consists only of idempotent elements. An example is the ring of integers mod 2. So our right answer is x is equal to x, that is option A. तो इसके बाद मेरे पास सेकंड ऑब्जेक्टिव है, a group of coordinates is a non-abelian group of order 6, 8, 10 और 4। तो इसके आंसर की रवान से पहले हम पहले रीजन की बात कर लेते हैं। इन ग्रुप थ्योरी द क्वाड्रेनियन ग्रुप Q8 sometimes just denoted by Q is a non-abelian group of order 8। तो हमारा जो राइट आंसर है इसका बी ऑप्शन है, दैट इज ऑफ ऑर्डर 8। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज डैश। ऑप्शन ए एबिलियन ग्रुप, abelian but not cyclic, option B abelian group, option C non-abelian group, option D a cyclic group। इसका सूटेबल ऑप्शन जो है वो cyclic group है, because a cyclic group, इसकी रीजन ये, a cyclic group is a group that can be generated by a single element and every cyclic group is an abelian। इसके बाद नेक्स्ट है पार्ट 4 में, any conjugate subgroups of a group G are dash equivalent similar isomorphic D none of these। तो इसका राइट आंसर है isomorphic, because it is according to the definition of isomorphism a close similarity in the crystalline structure of two or more substances of similar chemical composition। तो इस चीज़ प्रॉपर्टी जो है, इस प्रॉपर्टी को हम आइसोमॉर्फिज्म का नाम देते हैं। सेम ही बात हमारे पास एनी टू कॉन्जुगेट सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप जी में की गई है। पार्ट 5 है मेरे पास, if H is a subgroup of index dash then H is a normal subgroup of G। ऑप्शन ए 2, B 4 और C प्राइम नंबर और D नन ऑफ दिस। इसके राइट आंसर की तरफ आने से पहले हम इसकी रीजन की तरफ आ जाते हैं। थ्योरम एक है, उसकी स्टेटमेंट है, प्रूव दैट अ सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2 इज ऑलवेज अ नॉर्मल। सो माय राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज ऑफ इंडेक्स ऑफ 2। इसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास 6, NG is a maximal ideal of a ring Z if and only if n is a dash प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, नेचुरल नंबर या नन ऑफ दिस। मुझे इसका सूटेबल आंसर प्राइम नंबर लगता है। इसकी रीजन देख लेते हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट है, if n is an integer then one show that n cyclic is equal to nz is a prime ideal of Z if and only if n is prime। so our right answer is प्राइम नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 7 ये, लेट G बी अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 24 जनरेटेड बाय A देन ऑर्डर ऑफ A रेज़्ड टू पावर 10 इज इक्वल टू ऑप्शन बी 12। इसका राइट आंसर होगा, बिकॉज इफ G इज अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n then for any divisor m of n there exists a unique subgroup H of order m। नेक्स्ट है 8, an indexed set of vector v1 v2 v3 up to so on vn in Rn is said to be dash if the vector equation x1 v1 plus x2 v2 plus x3 v3 plus up to so on xn vn that is equal to 0 has only trivial solution। This is the definition of linearly independent। ये linearly independent is said to be linearly independent, ये इसका राइट आंसर है। इसके बाद पार्ट 9 की तरफ आ रहे हैं, if a vector space V has a basis n vectors then every basis of V must consist of exactly dash vectors। अगर आपके पास एक वेक्टर स्पेस है जिसके वेक्टर स्पेस V है बेसिस n वेक्टर्स, तो इसमें हमने ये देखना है देन एवरी
bases of V must consist of exactly dash vectors. n+1 होंगे, n होंगे, n-1 होंगे या none of these होंगे। इसके राइट आंसर की तरफ आने से पहले हम रीज़न की बात करते हैं। रीज़न क्या है इसमें? इफ़ अ वेक्टर space V has a basis of n vectors, then every basis of V must consist of exactly n vectors। तो मेरा राइट आंसर बी ऑप्शन है। तो इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ आ रहे हैं। पार्ट नंबर 10 है मेरे पास। पार्ट नंबर 10 में पूछा गया द सेट सी एन ऑफ ऑल n रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर अ फिक्स पॉजिटिव इंटीजर n इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। दैट इज माय राइट आंसर। सी ऑप्शन इज माय राइट आंसर। आज का लेक्चर हमारा 10 MCQs तक है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर इसी पेपर के बाकी ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई एरर होता है या कोई बात समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।